184, Ginger and Nigel. Ginger has holding of Oh, 10,000 ordinary shares in Nutmeg, an unquoted trading company, which he purchased on 13th of February 2013 for 2.9 per share. The current value of the share as agreed with HMRC is 6.4 per share. Okay, but Ginger intends to sell some of the holding to her daughter at 4 per share during 2023. Ginger and daughter will elect to hold over the relief as gift of business asset. The tax year 2023, Ginger will not make any other disposals and is therefore not utilize an annual exempt amount. Explain how many one ordinary shares in Nutmeg Limited Ginger can sell to her daughter. Can sell to her daughter for pound 4 per share during March 23 without incurring any capital gains tax liability for the tax year 22-23. Computation of how many ordinary shares can Ginger Limited sell? 6.4 trade value, cost of acquisition, ये इसमें इंटरेस्ट कितना हो गया 4 पर शेयर एक्चुअली कॉस्ट कितना था तो सेल एट अंडर वैल्यू हो रहा है ना तो अगर शेयर अंडर वैल्यू हो रहा है तो फिर बाहर कितने का बिकेगा देन अगर मैं अपने बेटे या बेटी को बेचने जाऊंगा तो मैं कितने का बेचूंगा 4 का बेचूंगा कॉस्ट उनका 2.39 है तो मेरा नेक्स्ट जो गेन आता है वो इतने का आता है चार्जेबल गेन ऐसे मैं यहाँ पे फिलिंग दे देता हूँ यहाँ पे मेरे पास 10 शेयर है
हेलो। हाँ बोल ना। मैं पूजा करके आता हूँ। हाँ चलेगा चलेगा। बाय। ठीक है, कॉल करता हूँ देखो मैं। यस बाय। हम्म। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 1.61 है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, फिर ये वापस 10,000 शेयर्स ही आ जाएंगे। राइट। जहाँ तक मुझे लगता है ना, दिस इज आवर चार्जेबल गेन, राइट। इफ वी सी, दिस इज आवर चार्जेबल गेन। तो अभी हमारा यही कॉस्ट पे हम हमारा एईए निकालेंगे, क्योंकि हम 16100 से 12300 माइनस कर रहे हैं। 16100 में से अगर 12300 माइनस करें तो इसका कॉस्ट भी नहीं आएगा। सो द नंबर ऑफ शेयर्स वुड बी 7640, ऑलमोस्ट 7640 शेयर्स वी विल ट्रांसफर विदाउट इंकरिंग कैपिटल गेन्स टैक्स लायबिलिटी। विदाउट इंकरिंग कैपिटल गेन्स टैक्स लायबिलिटी तो यही रहेगा 12300 का पाउंड में। बट हमें नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढने हैं। हमें नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढने हैं तो हमें सबसे पहले पर शेयर की प्राइस ढूंढनी थी। और पर शेयर की प्राइस यहाँ तक 1.661 की आ रही है। इस 6.4 मार्केट वैल्यू माइनस 2.9 गेन जितना मिला, फिर गोबर मतलब बेसिकली गिफ्ट ऑफ बिजनेस एसेट रिलीफ कितना 2.4 है, उसमें माइनस करेंगे चार्जेबल गेन दिया जाता है। ओए सॉरी। मेरे हिसाब से 7640 शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड। लेट्स जस्ट चेक। 7640 परफेक्ट। The disposal is at undervalue, so only the gift element of the gain can be held over. The consideration paid for each share will immediately be chargeable to capital gains tax to the extent that it exceeds the allowable cost. The chargeable amount is therefore 1.61 per share. हम immediately टैक्स पे करेंगे लेकिन इस अमाउंट पे पे करेंगे। Ginger's annual exempt amount for the tax year 22-23 is 12,300 because she hasn't utilized any. So therefore the number of shares will be 7640. ठीक है guys? आगे बढ़ते हैं। खाली ये हमें एक्सप्लेन करना है, so we have to show it in a theory form rather than what we did। भी हमने एक्सेल पे सॉल्व किया। तो डिस्पोजल इज एट अंडर वैल्यू, सबसे पहले वो लाइन आएगी कि डिस्पोजल इज एट अंडर वैल्यू एज इट हैज बीन सोल्ड टू हर डॉटर। नेक्स्ट, the cost of acquisition will be reduced from the market value, thus giving us gains. The gift of business asset relief will be available, because of which the chargeable gains would be 1.61 पर शेयर मतलब वो प्राइस। उसके बाद उसी प्राइस पे हम हमारा एईए माइनस करेंगे। The concession paid for per share will immediately be chargeable to capital gains tax to the extent that it exceeds the allowable cost. The chargeable amount is therefore pound 1.61 per share। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Calculate capital gains tax saving of disposal of 2000 shares in Cinnamon Limited during March 23 is made by Innocent rather than Nigel। Innocent has been managing
Innocent and Nigel are married couple. Both have shareholdings in Cinnamon Limited, an unquoted trading company with share capital of 1 lakh ordinary shares. हमें ढूंढना है. Okay. Mutation ओए सॉरी पर्टिकुलर काउंट पर हाँ तो हम ऊपर से उठा सकते हैं. Is made by Innocent. Made by Innocent rather than Nile. तो हम ऐसा फॉर्मूला दे के रखेंगे यहाँ पर. इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिनेमन लिमिटेड since company is owned corporation. She currently holds 20,000 shares with matching voting rights on the company. These shares were subscribed for on 1st of July 2013 at par value. Nigel has never been an employee or a director of Cinnamon Limited, and he currently holds 3,000 shares with matching voting rights in the company. These shares are purchased by an existing shareholder on 23rd April 2017 for 46,200. तो इसका एक मिनट. ये तो ये किसने मेजर नेवल एम्प्लॉय नाइजल ना. तो ये ऊपर नाइजल काम कर रहे थे. 46,200 इंटू 2/3 करेंगे हम यहाँ पे. ये अमाउंट मिलेगा. इधर इनोसेंट और नाइजल सेल 2,000 ऑफ देयर शेयर्स फॉर 65,000. बेचेंगे तो वो लोग 65,000 के ही. यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 डिवाइड बाई 20 इंटू 20,000 शेयर्स. हाँ ना. होल्डिंग 2,000 शेयर हम बेच रहे 2,000 शेयर ही. और उसने खरीदे भी 2,000 मतलब उसने सब्सक्राइब भी 2,000 के ही किए थे. सो दैट्स ओके. तो but then unsure both innocent and Nigel have already made the disposal which fully utilize their annual exempt amount, and they will each have taxable income of 80,000. Okay. They each will have a taxable income of 80,000.
So innocent is actually ये ना, so she will get a badder release if she's an employee. She has an employee, she has equal voting rights. I think उसके पास 20% almost shares है. She has 20% holding also. On July 2013 उसने फिर हेल्प किया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा 10%, ऐसे लिख लिख देता हूँ मैं. Notes. Innocent will qualify for badder as she has, there are like a lot of reasons to it. और whereas यहाँ पे मुझे लगता है he is already plus plus मुझे shares की बात हो रही है, he is not been an employee, he does not have more than 5% holding. तो ये आ गया. यहाँ पे 20% पे वो टैक्स पड़ेगा अभी उसको. फॉर निजर, so he is paying tax more at a rate of 20% and he's being charged 6. ये किसके लिए था? आई थिंक ये इनोसेंट के लिए था. Thus 540 tax will be saved if the disposal is made by innocent rather than Nigel. ये नीचे हमें बैडर के अलग अलग ये देने पड़ेंगे कि वो why she has qualified for badder, like she is an employee of the firm for more than 2 years. She holds more than 5% shareholding in the company. She has been an employee, has an employee मैंने बोल दिया. The shares are in an unquoted trading company and all that stuff. ठीक है. तो आंसर चेक कर लेते हैं. आंसर इज 540. Nigel पे CET and not qualified for badder, ये सब वो सब ठीक है. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching and bye.